Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start our exercise 8.3. So let us start with exercise 8.3, very first question. So first question is question number 1, in which it is asked that find the amount and compound interest. Means we have to find A and CI for all the question. First one, that is given P principal, it is 10,800 rupees. R rate of interest, it is given 12.5%, and we can simplify like 25 by 2%. Time period, it is given 3 years. Time period, it is 3 years, and we have to find compounded annually. Compounded annually means we can take K is equals to 1. Now for this simplification we are starting with amount because we don't have a direct formula for CI. So A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to time period. Here in place of K I had already put it 1. Now in place of P I can write 10,800. 1 plus R means 25 by 2. So I can write 2 into 100 like this, and time period it is 3. Now if I am simplifying this, then 10,800 would be as it is. 25 fours are 100. So 1 plus 1 upon 8 raised to 3 I can write. So 10800 is equals to, I can write 9 by 8, and cube means 9 by 8 into 9 by 8. Now if I am simplifying this, so I can cancel out by 8 ones are 8, 28, so 8 threes are 24, and again 40, so 1350. 1350 into 729 divided by 64. This division if I am doing, then it would be 15,377.34 rupees. 15,377.34 rupees. That is the amount. But we want amount as well as CI. So in place of CI we can find A, CI is equals to A minus P. So 15,377.34 minus 10,800 rupees means I can say 0.34 would be as it is 77 rupees. 8 is here, it would be 45. So this is a CI. So for first question we can say 4,577.34, this is a CI, and amount it is 15,377.34 rupees. So let us move to question number 2, means B, that is a principal, it is 18,000. So P here it is given 18,000 rupees. R is equals to, R is given, that is 10%. R is 10%, and time period it is given 2.5 year. 2.5 year, and compounded annually है. So इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला फॉर्म आए और वो पावर में हो, मतलब टाइम पीरियड की जगह पर हो, तो टाइम पीरियड में अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to T. This I will write. A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to T. If here I am writing 5 by 2, means I have to find square root as well as fifth multiply by 5. So ऐसा ना करने से अच्छा है कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. 2 plus half year ऐसे. So 2 ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो ये फॉर्मूला से, और लास्ट का हाफ ईयर जो बचता है वो सिंपल इंटरेस्ट से कर लो, तो आपका सम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट करने में ही आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है. तो वो ना करते हुए अपना टाइम भी सेव करो और आसानी से ये सम कर लो. तो ये A मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 18,000 एज इट इज 1 प्लस R मीन्स 10 डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड, यहाँ पे 2 ईयर ले रहा हूँ. क्यों 2 ईयर लिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए हाफ ईयर में अलग से बाद में कैलकुलेशन करने वाला हूँ. अगर
यस यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो k की वैल्यू 2 आ जाती, तो 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो हम डायरेक्टली इस तरह से ये सम कर सकते थे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो तो 0 0 कैंसिल आउट, सो आई कैन राइट 18,000 इनटू दिस LCM, so 11 by 10 into 11 by 10. This 0 0 cancel out, 0 0 cancel out. 180 into 121 I can write. So 121 into 180 if I am doing, then 12100 089. If I am adding, then it would be 21,780 rupees. This is the amount at end of 2 year, end of second year. But second year के लिए जो amount हुआ that would be principal for third year. तो third year के लिए ये principal हो गया, तो SI is equals to formula P1RT upon 100, और इसको मैं नाम दे देता हूँ P1। क्यों? क्योंकि ये second year के लिए क्या होने वाला है, principal, sorry third year के लिए। So third year के लिए I can write 21,780 into rate, that is 10%, and time period, अब कितना time period यहाँ पे लोगे 1/2। क्यों 1/2 लिया? क्योंकि half year ही है, तो half year की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16 और 9, तो 1089 रुपीस ये हो गया SI। तो ये SI मतलब अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेता, तो P प्लस P1 प्लस SI। क्यों P1? बिकॉज ये हमें लेना पड़ेगा, तो हियर आई कैन राइट 21,780 प्लस 1089। If I am adding this 2, then it would be 22,869 rupees. This is the amount A after 2.5 year. अब ये कैलकुलेशन जो भी हो रहा है वो at the end of 2.5 year है। अब CI चाहिए, तो CI का फॉर्मूला A minus P, so it would be 22,869 minus, so initially we have 18,000 rupees, so it would be 4,869 rupees. So this is the CI. Like this we can find for any numbers. If it here it was 3 year and 1/4 year, 3 whole 1/4 year means 3 month के लिए भी कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा कोई समय है जिसमें आपको पता नहीं है कि भाई फ्रैक्शन पावर में आ रहा है, यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन कभी भी आना नहीं चाहिए। पावर में फ्रैक्शन आए तब आपको क्या करना है, तो पहले जो होल पार्ट है उसका अलग से कैलकुलेशन कर लो, और जो पार्ट वाला रह गया है उसके लिए आप फिर से सिंपल इंटरेस्ट का सम कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन मींस सी, इट इज प्रिंसिपल 62,500, सो हियर प्रिंसिपल इज 62,500 रुपीस। टाइम पीरियड इट इज 1.5 year, 1.5 year means 3/2 year। R, that is 18%, sorry, R is 8% per annum compounded half year. R is given, that is 8%, but here solution compounded half yearly. Compounded half yearly मतलब in the year you will get 2 times interest. 2 times interest means K is equals to, you have to take 2. So I have taken K is equals to 2. So I'm writing the formula A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to T. This is a simple formula for compounding annually, but here TK and divide by K for this compounded half yearly or any other P, it is 62,500, 1 plus, in place of R I can write 8%. Just see in the previous question, B वाला question जो हमारा था उसमें हमने क्या किया हुआ था, तो भाई यहाँ पे 3/2 year पावर में आ रहा है, तो हमने 1 year की कैलकुलेशन अलग से की और हाफ ईयर की कैलकुलेशन अलग से की। बट यहाँ पे देखो K is equals to 2 लिख दिया, यहाँ डिवाइड बाई 100, और T के मतलब 3/2 into 2 कर दिया। क्यों ऐसा किया, तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अलग से कैलकुलेशन किया। सो ये 2 2 कैंसिल आउट, सो आई कैन राइट 62500 is equals to 1 plus
ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 25 ज़ा. सो इफ आई एम टेकिंग एलसीएम or simplification like this, then 62500 into 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25. So 25 का स्क्वायर दैट इज 625, मतलब 100 बच गया. 25 4 ज़ा 100 हो गया, तो 4 into 26 का क्यूब. कुछ इस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. तो ये सिंप्लीफिकेशन करते हो तो उसका आंसर आता है दैट इज सी क्वेश्चन 70304 मींस अमाउंट इज 70304 रुपीस. दिस इज अ अमाउंट. अब ये ए मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सी आई. तो सी आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ए माइनस पी. 70304 minus 62500. So I can write 7,804 rupees if I am subtracting this from this. So देखो k की जब वैल्यू आपको लेनी है, k वाला सम हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देख लेना है कि भाई t है वो, अगर t यहाँ पे 3/4 होता ना और k की वैल्यू 2 आ रही होती, तो फिर से मैं वही चीज करता कि होल वाला पार्ट या तो 6 मंथ के जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एक बार कर लेता, और जो बाद में पार्ट आ रहा है उसके लिए मैं अलग से कैलकुलेशन करता. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी और फोर्थ वन, जो भी बोलो आप. ₹8,000 आपको दिया हुआ है, तो मतलब प्रिंसिपल इट इज 8,000 रुपीज, पी इज 8,000 रुपीज. देन आगे दिया हुआ है फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड इट इज 1 ईयर, टी इट इज 1 ईयर. R given that is 9% and compounded half yearly. R this is 9% and compounded half yearly means K is equals to, you have to take 2. Now we are finding A is equals to P in the bracket 1 plus R by K by 100 raised to T into K. Simplify 8,000 value put I am putting, then 1 plus R means 9 by 2 upon 100 raised to tk means 1 into 2. So if simplify 8,000 here, 1 plus 9 by 200 raised to 2 I can write. Now 8,000 as it is into 209 upon 200 into 209 upon 200. Why I have written like this? Because firstly I am taking LCM, 200 ones are 200 plus 9, so it would be 209, and here it is square, so I had written 2 times. Now this 0 0 cancel out, this 0 0 cancel out, 2 4s are, and 4 5s are 20 we can do, but I am doing 10. 2 2s are 4. Now 209 into 209 first we have to do, and then after multiply by 2, and last division method divide by 10 hai, so we can directly find that particular thing. But so 209 into 209 into 2, 8,639.20 rupees. This is our amount A. But I don't want any only A. I also want 8,739 is there. So 8,739.20 and CI is equals to A minus P. So 8,739.20 minus 800,000. So it would be 739.20 rupees. This is our CI. Clear? First, what we have to do? We have to simplify the question. And if it is given in a half year, here T it is full, so then whole number, then no need to worry, because if we have this type of year means mixed fraction or improper fraction, then we have to firstly convert that into simpler part. Now moving to the next question, question number E, that is 10,000. Again principal it is given 10,000 rupees, principal 10,000 rupees. Here CI that we have to find and amount that we have to find. R and T also given. Time period it is 1 year. T is equals to 1 year. Time period and R is equals to 8%. Compounded half yearly means we have to take K is equals to 2.
Now if I am solving this sum, then again I have to copy this formula. A is equals to P in the bracket R by K upon 100 raised to T. So A is equals to P in the bracket 1 plus R by 100 raised to T into K, and here also divide by K. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि लिखना भूल जाते हैं. नाउ we are putting the value in place of P. I have written 10,000. 1 plus R 8 divided by K means 2 divided raised to 100 T 1 into 2. और अगर if it is compounded half yearly, in place of half yearly it was compounded quarterly, then in a year you will get 4 times increment, 4 times interest. So we can say K is equals to 4. So ये आपको ध्यान में रखना है. 2 4s are 100. I can write now 1 lakh, sorry 10,000 into, again I am writing 104 by 100 into 104 by 100. Why I had not cancel these things? Because I can cancel this 0 0 here, this 0 0 here. So it would be our answer 104 square. 104 square if you are writing, then it would be 10,816. 10,816 rupees. So this is our amount A. Now I want CI. So CI is equals to A minus P. So 10,816 minus 10,000. So your answer would be 816 rupees. So this is our CI and amount is 10,816 rupees. Like this you can find any amount, any compound interest for any type of formula.